So, yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So, in today's video, we're gonna be doing a practice set of the module, uh, data manipulation with data tables in the studio, and we're gonna be seeing how we can use the modern Excel design or the modern design in UiPath Studio to counter our problem over here. Let's get started, guys. So, यहाँ पे लिखा हुआ practice 1 calculating sums, ठीक है? हमें क्या करना है यूज स्पेसिफिक मॉडर्न डिजाइन एक्टिविटीज टू वर्क विद एक्सेल फाइल्स टू रीड डेटा राइट डेटा एंड सेव फाइल्स एंड सो ऑन manipulate data tables according to business process requirements, right? So what we need to do, suppose we need to calculate the sum of the values from two different columns in an Excel file in two ways and store the value in the third column. And इसके पास हमारे लिए yes, we have a sample data as well. Okay, let's see. Okay. So the task is that हमें क्या करना है, हमें ये रो को कॉपी करना है, हमें ये रो को और ये रो को ऐड करना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है, सिंपल। इन दोनों का आउटपुट यहाँ पे आएगा, इन दोनों का आउटपुट यहाँ पे आएगा, सिंपल, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, ठीक है? तो जस्ट क्विकली गो हियर, क्रिएट अ प्रोसेस, चैप्टर 79, ठीक? So I'll say Excel data tables this one like this and I will just create my process, ठीक है? ध्यान रखना गाइस, इसमें इन्होंने यहाँ पे कॉलम नेम नहीं दे रखे हैं, we need to work accordingly like this, okay? So the first part will be to read this Excel, ठीक है? and इसमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, first keeps the Excel open and writes the result in real time row by row so that you can see the changes. So to keep the Excel open, we can either use the Excel application scope or we can either use the modern design activity. Since this whole certification is based on the modern design, we'll be using the modern design only. Okay, let's go. So I'll be using an Excel process scope over there. So I'll be using an Excel file like this, okay, and I will be just doing it like this. Yeah, I think मैंने आपको बता रखा है पहले पूरा, दिस फ्लो हैज बीन कंप्लीटली बीइंग अंडरस्टूड बाय योर गाइस। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये आपका प्रोसेस स्कोप है, दिस इज एक्सेल प्रोसेस स्कोप, ठीक है? इट कैन ऑल्सो रीयूजेज एन एक्सेल प्रोसेस स्कोप, ओके? इसके अंदर हम यूज एक्सेल फाइल, कौन सी फाइल हमें यूज करनी है एक्सेल के अंदर, कौन सी फाइल रीड करनी है, यहाँ देंगे हम वो फाइल को और जहाँ हम रेंज देंगे, एक्सेल हैज बीन डिनोटेड बाय द नोटेशन एक्सेल. We're telling the sheet as well. I think sheet is sheet 1 only, okay? And the range I'll be giving as 1, okay? This is it. So has headers? No, doesn't have headers. So I'll just quickly see tt put and this user this, just turn it into a doc file. Got to use the debug. Let's go. अच्छा हो गया है, ठीक है? I'll say dt input and you can see that I have column 1 and column 2 with me. Column 1 is 159 to this row, column 2 is 136 to this part of it, ठीक है? And this is very very clear to you guys. तो हमने क्या किया यहाँ पे guys, हमने अपनी Excel है वो रीड कर ली है. Now they are asking us to keep the Excel open and write the result in real time row by row so that you can see the changes, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अगर हमें Excel open रखनी है
So we need to be using all the activities inside this scope only. Okay, got it. So what I can do, can just this scope, and I can use for each row in the data table. The data table will be dt underscore input. And now what we need the row. So you just use it as a row iterator. आपको बता रखा है. I just need to write line over there. मैं क्या करूँ, मैं इसे चेक कर रहा हूँ कि जो मेरी रो है उसके अंदर क्या है, डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है, column 1 and this is as an object. Let's see. ठीक है, if it is coming then it's fine. Let's just test our project, right? I think it's coming. Okay. Hmm. 159 3359 everything, it is coming over there. Got it. Okay. तो हम ये expression लिख सकते हैं. Pretty easy. So I'll just use an assign activity like this. We'll say uh, int str uh, column 1. ठीक है, ये row one dot to string, and again I will be converting it to int or integer over there. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर गाइस. मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर मैंने स्ट्रिंग को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस str will not be str but it will what, it will be an integer variable. Okay, hope this is very clear guys. ठीक है, ये ऐसे हो गया है. इस पे मैं कॉपी पेस्ट करके just use like this. We'll be renaming it like this. ठीक है, n32 variable over here. तो column name will be to this time. ठीक है, दैट इज कूल आई गेस. गॉट इट. हमने क्या, हमने अपनी रो वन के वेरिएबल, कॉलम वन के जो भी नंबर्स हैं और कॉलम टू के नंबर्स हैं उनको क्या किया, एक साथ मैंने यहाँ पे रख लिया. ठीक है, नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू, मैंने क्या करना है, मुझे इस फॉर ईच के पहले एक ऐड कॉलम एक्टिविटी, ऐड डेटा कॉलम एक्टिविटी ऐड करनी है. कॉलम नेम विल बी result, the data table will be input, say column 3. okay, राइट. एंड अब यहाँ इस डेटा टेबल के अंदर इनपुट मेरा कॉलम जा चुका है. सो नाउ विल बी जस्ट एडिंग इट लाइक दिस. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रो कॉलम 3 will be as an object over there, will be int column 1 plus int column 2. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर गाइस. यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अगर मैं अपनी डेटा टेबल को यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ in the immediate panel only, write some gibberish data, put it inside a debug, and now if I run my for, let's clear this for a better understanding guys. ठीक है, just say now. अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, इन सब का एक एडिशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे. कि देखिए फर्स्ट जो मेरा है, अच्छा एक मिनट मेरा काम करता है, जस्ट sorry, I need to now call it.
Now let's see. It is not in the scope. Oh nice. See with local spending अभी नहीं है, scope ही नहीं है उसका. That's 1 second. Just change it. Main sequence. Run it. Okay. So guys, you can see that we have a column 1, column 2, column 3 over here. But अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया है. It is not printed inside the sheet. तो यहाँ पे ये मेरे एडिट पैनल पे दिख रहा है. बस अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है. आई होप आपको ये पूरा गाइस समझ में आ रहा होगा. but ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं. इट्स वेरी क्लासिक वे टू डू इट. इट्स नॉट दैट क्लासिक और मॉडर्न वाला क्लासिक नहीं है. It's very easy way to do it. Some packages are there as well. Let's try to update them. Oh, there are many packages. Okay, okay, nice. So let's quickly update them also. Any type of you can say discrepancy over there. We just need to add a a right range activity, and now it will be done. Okay, so I hope this is okay. I'll just say write data table to Excel now. What to write and the destination Excel dot sheet 1 sheet by sheet 1. यहाँ मुझे write करना है what to write, the data table I have to write over there. ठीक है, let's try to run it. oh, तो उसने बहुत fast वे में कर दिया. Let's okay like this. Need to show you guys on runtime actually. So runtime के लिए तो I think I have to use a slow step now. Okay, यही होगा काम, यही हो सकता है. ठीक है, let's go. Okay. You see, it already created some columns over there. The first is this, second row is out addition is this, third row addition is this, fourth row addition will be there, and if I'll be increasing my slow step speed, as you can see that it is printing in runtime, right? 6 plus 1 is 7, so we are correct on a correct situation over there, right? It's pretty easy guys, right? They just want us to get the hands-on familiarity with the concepts there in the modern activities as well. ठीक है, तो आपने देखा that we have quickly added this all part over the column. Okay, ठीक है, ये हो गया. And now what they want, first part is done guys. Keeps the Excel closed, set the column values and then in the memory and add all the table to a new Excel file at once at the end. Okay, cool, we can do it. हमें क्या करना है, मैं दोबारा से डिलीट कर देता हूँ. So that you can read the basic data. What is this? Yep. Now keeps the Excel closed. अच्छा, इसको तो मैं quickly I'll just say Control D, and now I'll be using a reading activity, simple reading verbo activity, and just do the same thing over there. Sheet 1, sheet 1 it is. Range I'll leave it to blank, and the data table I'll give as dt underscore put like this. The data table has been created. ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, अब मुझसे क्लोज रखना है.
So I need to be what, अब मुझे क्या है यहाँ पे close रखना है मेरे workbook, and I'll be closing my workbook, and then quickly the path will be same, everything will be same. pt, sorry, input 2, just keep it as, sorry, row. Let's use a multiple assign this time, make it a different workflow than the other parts. Okay, so I will say int integer 1, I can say, so I can say row, uh, expect a string, column 1 string, dot to string, and we can go with a conversion over there like this. I use convert to in 32 is time. Here it is. Right? I just changed it to bit over there. It is right. Int again. int2. Enter it is. So row, and I'll be using column as a table means column 2 not to string, and I'm converting it to int again, guys. And this will be it. Quickly changing the variable type, right? I'll be changing variable type as int32. Okay, and just say row. Now here what I am doing, here I am dynamically allocating the value inside the table. Okay, so will be PUML column 3, right? And we just a concatenation of int plus int1 plus int2, right? Pretty simple. Here it is. And now I'll do what? I'll just say that write range activity, write range workbook over there. Okay, workbook. I'll be telling the same workbook, and here the same sheet as well. Sheet 1, the data table could be equal. Okay, I'll just say add headers like this. But it is pretty simple, guys, over there. And अगर यहाँ पे आपकी Excel workbook खुली है, तो you can also use you can say try catch over there. Just close the workbook, handle the exceptions, and go with the flow. Okay. For this demo, we are closing it manually, right? So let's see. I'll run the automation. Okay. Cannot assign convert to int row in Python to int1. Why is that? Convert to int32 row. Okay, it's int30. Okay, sorry, I used the oops, used the what to int, right? It will be cint. What I think it. Oh, no. Some error over there or what? Check. Uh, is pt input 2. Okay, cool. Now we are handling a row. ठीक है. It is 31, 32. Should be taking it.
row column 1 dot to string. Busy row. ओके सो माय बैड गाइस, मैंने यहाँ पे ऐड डेटा कॉलम नहीं किया है क्योंकि मैंने पूरा का पूरा जो स्कोप था उसको मैंने एक टाइप का इग्नोर कर दिया था, ये कमेंट आउट कर दिया था. सो आई कुडंट हैव एडेड दैट न्यू डेटा कॉलम, तो मुझे यहाँ फिर से ऐड करना पड़ेगा, तभी मेरे को एरर आ रही है बार बार. आई जस्ट से COLUMN 2 column 2 and it will be input 2 over there. Okay, so yeah, so it will be like this. And now हम इसको रन करेंगे यहाँ पे. Can run it. uh One more thing I'd like to try. See guys, please check your columns क्योंकि इस पे columns नहीं दे रखे हैं. So we will be taking the columns जो हमें automatic generated मिलेंगे by the studio. ठीक है, run our automation and it ended successfully. Why was that? Because I was not having that add data column over there. ये मुझे करना चाहिए था पहले. So see, I'll be reading it, I'll be adding a new column and then I'll be writing it to the notebook over there. Okay, now I'll just quickly go to the same notebook, downloads, and this. Oops. So, and you can see that we have all the data over there. ठीक है, तो आई होप आपको गाइज ये समझ में आया होगा ऑटोमेशन क्या है. इट वाज वेरी वेरी इजी, राइट. एंड अभी हमारा टाइम भी हो गया है, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द. इसमें यहाँ पे ये रखा है इन्होंने कैसे कैसे करना है, बट हमने अपने हिसाब से किया है. सो दे आर यूजिंग सम, लेट्स सी देयर मेथड एज वेल. ओके, सो यूज फाइल, ओके, do for each. They have also created an index over there. ठीक है, see, automation should be done. Whatever you are finding it very easy over there, automation should be done like that only. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, करंट इंडेक्स प्लस 1. मतलब देखिए, करंट रो इंडेक्स हमारे 0 आएगा, 0 प्लस 1 से स्टार्ट करने के लिए इन्होंने एक्सेल रो इंडेक्स यहाँ पे खुद का क्रिएट किया है. एंड इट विल बी लाइक दैट ओनली, दे हैव एडेड एवरीथिंग एट द एंड. ठीक है, यहाँ पे लिखवा रखा है. शीट के अंदर हम सेल भी यूज कर सकते हैं, डॉट सेल एंड सी एक्सेल रो इंडेक्स 1 तो C1 पॉइंट लिखवा रहे हैं बार बार, अलग 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 यहाँ पे है. सो बट वी हैव डन इट, ओके, नो वरीज. देखिए, द मेन थिंग इज दैट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड द आंसर शुड ऑल्सो बी व्हाट क्लियर. ठीक है, सो ये है. यहाँ पे एक हमारे पास एक नया आता है, इंटीजर पास. दिस मेथड कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग और ए जनरेट वैल्यू वेरिएबल टू एन इंटीजर. मीन्स हमें क्या है यहाँ पे इनसाइड द, मतलब ये क्या करेगा, इट विल बी कन्वर्टिंग स्ट्रिंग और ए जनरिक वेरिएबल इनटू अ इंटीजर, सिंपल एज इट इज. ठीक है, वैल्यू a प्लस वैल्यू b. तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, बट वी हैव डन इट विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ओवर देयर. गॉट इट. तो गाइस, आगे जाके जब हम लिंक क्यू पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा उसको शॉर्ट मेथड में हम कैसे कर सकते हैं और भी ज़्यादा. डोंट नीड टू रन ऑल दिस लूप एंड ऑल, इट विल बी ओनली डन इन अ सिंगल असाइन एक्टिविटी. उसी में पूरा का पूरा हमारा क्या है, आंसर आ जाए. ठीक है, सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही. आई डोंट थिंक इसमें कोई हमारे पास एक्सरसाइज है. नेक्स्ट विल बी सीइंग वर्किंग विद डेटा टेबल्स पार्ट 2. लेट्स सी इसमें क्या है. Extract the stored data tables, create a schema and configure it. Okay, I think the extension and the source. Okay, no worries guys, so we will be continuing this in our new video. ठीक है, अभी के लिए इतना ही. And if you like the content, don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much guys. Happy automation, and as always, keep learning.